Hey guys, welcome back to RR Performance Store. So today we have a beautiful new Skoda Kushaq with us. उसका थोड़ा डेंटिंग बींडिंग का काम है, which we'll show you. And yeah, इसका एक फेंडर है और आगे का बम्पर है जो the customer was driving और एक किसी ने उनको कट मार दिया तो उन्होंने जाके एक ट्रक को बैंग कर दिया. And that damage has happened, and he did not want to claim his insurance for a small work. उसमें उनका नो क्लेम बोनस भी जाएगा एंड प्लस नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम बढ़ सकता है. ये सब रीजंस कह ही इज अग्रीड टू do it from his own pocket. So we'll show you how the work happens with from starting from your denting to your painting. Though this is not a very major job, uh, but yeah, we would like to cover it and show it to you guys. So stay tuned through the entire episode. We'll show you the damage first, and then we'll move on to the work process. Cheers. अभी यहाँ पे पहला तो हम लोग उसका गाड़ी का जो फेंडर ट्रिम होता है, जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक ट्रिम है, वो पूरा निकालेंगे. निकाल के वील एसेस द डैमेज एंड स्टार्ट विद द डेंटिंग वर्क. इन दिस पर्टिकुलर कार वी डिसाइडेड टू डू द डेंटिंग बाय हैंड ओनली. जो हमारा डेंटर है वो हाथ से ही उसका डेंटिंग करेगा. एंड वंस द डेंटिंग इज डन, उसको ग्राइंडर से फिनिशिंग करके then we'll move on to the painting part. This particular car, since the dent is there, though it looks like a big dent, but it's at one place only, तो वो हाथ से ही डेंटिंग पूरा हो जाएगा. एंड डेंट पुलर से करने में और tedious जॉब हो जाएगा करके वी आर गोइंग टू डू इट बाय हैंड. यहाँ पे आफ्टर वी हैड रिमूव द साइड ट्रिम वी हैड रियलाइज कि उसके दो कान जो होते हैं, जो लॉकिंग सिस्टम का जो उसका ब्रैकेट होता है वो टूटा हुआ था. सो दैट ऑल्सो वी आर डूइंग अ प्लास्टिक वेल्डिंग रिपेयर ऑन इट सो दैट इट सिट्स परफेक्टली, इट डज नॉट वाइब्रेट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड we'll fix it up, we'll weld it off, and then we'll fix it on the car back.
यहाँ पे अभी पूरा डेंटिंग वर्क हो चुका है, ग्राइंडर से सैंडिंग भी हो चुका है। सैंडिंग करके हमारा न्यूमेटिक सैंडर से भी सैंडिंग करने के बाद में नाउ वी आर फिलिंग द पुट्टी। अभी पुट्टी फिल अप करके उसका भी सैंडिंग करके उसको लेवल अप करके अच्छे से विद द फील ऑफ द हैंड वी अंडरस्टैंड कि वेदर इट्स कम आउट, द शेप हैज़ कम आउट प्रॉपरली, वेदर लाइंस हैव कम आउट प्रॉपरली, वो सब चेक करके एक बार बराबर से सब हो जाए उसके बाद में हम लोग प्राइमर करेंगे। प्राइमर करने के बाद में वील मूव ऑन टू द पेंटिंग पार्ट। अभी प्राइमर सब होके वॉशिंग वगैरह होके मास्किंग भी कंप्लीट कर दिया है एंड वी टेकन द कार इनसाइड द पेंट बूथ एंड वी स्टार्टेड विद द पेंटिंग प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमर के ऊपर पहला जो ड्राई कोट हाथ मारा है दैट इज़ द बेस कोट। कलर का कवरिंग नहीं है, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कलर्स जिसमें कवरिंग नहीं होता है, इसमें क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बढ़िया, इफ़ यू यूज़ प्रॉपर ओरिजिनल डुपॉन्ट फार्मूला एंड डुपॉन्ट मटेरियल आपका जो शेड का रिफ्लेक्शन है वो भी परफेक्ट आ जाएगा एंड द कलर विल बी 100% मैच। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो वी आर यूजिंग डुपॉन्ट क्रोमैक्स and we are hoping after the job is done it will be all perfectly matched up only. And also you'll notice that we are only doing partial bumper in this particular case. पूरा bumper वो side तक अच्छा था on the right hand side, so we are just doing half of the bumper and the complete fender and we'll finish it off with a coat of lacquer at the end. अभी पेंटिंग होके गाड़ी बाहर आ चुका है पेंट बूथ से, सो यू कैन सी दैट द कलर इज 100% मैच एंड दैट्स वाई वी आर प्रोसीडिंग टू द प्रोसेस ऑफ रबिंग एंड पॉलिशिंग। सो रबिंग एंड पॉलिशिंग इसलिए किया जाता है जो भी इम्प्योरिटीज़ पेंटिंग के टाइम पे पैनल के ऊपर बैठ जाता है
स्लाइट डस्ट पार्टिकल्स जो रहता है या तो फिर ऑरेंज पील जो होता है जो एक्सेसिव स्प्रे हो जाता है, वो सब चीज़ों को हम रबिंग एंड पॉलिशिंग, सो सैंडिंग करके वो इम्प्योरिटीज़ को क्लियर आउट करेंगे और रबिंग एंड पॉलिशिंग में वो पूरा क्लियर कर देते हैं, सो दैट यू गेट अ फैक्ट्री ओईएम फिनिश ऑन द पैनल, इट लुक्स लाइक अ मिरर, देर इज़ नो ऑरेंज पील लेफ्ट ऑन द कार। वो हिसाब से ये करके we even do the rubbing of the adjoining panels, so ये पर्टिकुलर केस में इसका बॉनेट और जो डोर है वो भी हम लोग थोड़ा सा रबिंग मशीन के साथ मार देंगे, एंड या वील असेंबल द व्हीकल, वॉश इट एंड इट विल बी रेडी टू डिलीवर। Yeah, guys. So we've completed the denting and painting of this particular car. It's a very beautiful Skoda Kushaq orange tinge color. And yeah, जो इस पे डैमेज था वो that was fender and your front bumper. So we've completely the entire fender has been painted and the front bumper has been painted partially. Partially meaning half तक हमने किया हुआ है. So इसका डेंटिंग भी हो चुका है, पेंटिंग भी हो चुका है, एंड इट्स कम आउट रियली नाइस। थोड़ा सा अभी डार्क है करके इट्स डार्क आउट हियर इवनिंग टाइम में करके, बट इट्स 100% कलर मैच एंड इट्स रियली कम आउट वेरी नाइसली। जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है हमेशा का वो एट पार हो चुका है। So yeah, and it's washed, and now we are just waiting for the customer to come down and pick up the vehicle. So, hope you guys like the video. Hope you guys like us doing these smaller panels as well, covering these smaller panels, which actually shows your daily actions. तो आपका गाड़ी अगर ठुक जाता है, कुछ हो जाता है, तो it's very much doable. That is the whole motive of making these smaller videos. कि you need not be worried about कि उसका रिपेयर होगा या नहीं, कितना भी कोई भी चीज मेजर अगर डैमेज हो, एंड इफ इट्स एन एक्सपेंसिव पार्ट, आपका इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस में भी करना है, whatever it is can be repaired. Replacement is not always the option. So yeah, here we've shown things can be achieved back to normal, to the perfect original shape. Though this car had insurance, the client did not want to claim it. It's a brand new car. It's hardly like 6 or 8 months old, and the client did not want to, claim his insurance just for this smaller work. So it's completed now. We'll deliver off the vehicle in some time. Please do like, share, and subscribe to our channel, and so that your friends, your family members also know about us. And stay tuned for our regular episodes. Thank you. Cheers. Bye bye.